Akash has played a key role in simplifying digital journey of many MFDs. So without wasting time, let's welcome Akash. Good evening, Akash. Hi, Nishant. Good evening, everyone. Thank you for having me. So Akash, I'm curious to understand that you have worked with banks and also worked with ND in the past. So what inspired you to start something on your own and that too in the distribution space? Yeah, okay. First of all, I think you know, thank you so much, Nishant, Anita, Frame, and the entire team at Cafemutual. I think for more than a decade now, you guys have been doing uh, extremely great work in terms of spreading the awareness, knowledge, trainings, events. So hats off. I think it takes a lot of perseverance, courage, belief in what you're doing. Keep up the good work. My regards to Prem and Anita as well. Thank you so much, Akash. Secondly, I think I would want to congratulate everyone who is there on the call. I think it is a historic day for all of us. We have hit markets have hit all-time highs. Yes. 19,000 on Nifty and 64,000 on Sensex. So I think huge round of applause to the country's progress, and of course, without the contribution of distributors and advisors, I mean they have been doing thankless job of expansion of capital markets, bringing in new investors, the SIP book, the magic that it has done. Right. So yeah, I think all of you, commendable job. Keep up the good work. This decade belongs to India. ये भारत का दशक है, and I think we will only see growth and progress as we as we keep progressing. Well done, everyone. Yeah, so coming back to your Akash, sorry to interrupt. I would like to congratulate you on raising one of the largest fundraising round in wealth management history. Yeah. Thanks, Nishant. I think it just are able to raise $1 million, but I think more than the money, it just reinforces the belief that investors have backed the vision, and this is genuinely a problem we are trying to solve for the industry. Yeah, thanks. It just makes us more responsible towards the industry and shareholders both. Yeah, so thanks, Nishant, for that question. I think you are taking me down the memory lane. Almost 2 decades back, after my education, ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में जब भी आप जॉब कर रहे हो, you have to at least once work in ICICI Bank for whatever time frame, be it 1 year, 2 years. I was fortunate to work there for almost 3 years. Right. Little less than that. So immediately after my education, I gave the interview and I was selected as an officer. ये मैं almost 20 years back, तब दुनिया बहुत अलग थी. The rules of the games were very different. Industry was very different. So Nishant, ICICI Bank was a distributor. They had an ARN. And the department that I was in, we were given third-party products. So IPOs, mutual funds, bonds, through IFAs, ARN holders. So they were our sub-brokers. Yes. So I was the youngest in my, it was called INS function, Investment and Services Department. Okay. And then from Thane, for people who are in Bombay, they would be able to understand. The Central Line and the Harbour Line was given to me. All the branches of those banks. And it was my first job. Okay. After spending some time, I realized that IFAs used to become sub-brokers to ICICI Bank for one very strong reason. Also, a reason ये था कि we had an office boy who used to take all the applications जो
1-1:30 बजे तक जितने भी फिजिकल एप्लीकेशन हमारे ब्रांच में आ जाते थे, अच्छा एवरी ब्रांच हैड एन ऑफिस बॉय। अच्छा। तो वो सारे एप्लीकेशंस कलेक्ट करके वो फोर्ट जाता था लोकल ट्रेन पकड़, टू स्टैम्प दी एप्लीकेशन बिफोर 3 PM। तो हमारी वैल्यू एडिशन जो हम सेल्स वाले लोग जो पिच करते थे कि व्हाई दे शुड जॉइन अस, कि हमारे पास सर एक ऑफिस बॉय है जो आपकी एप्लीकेशंस फोर्ट में कैंप्स यूनिट में जाके टाइमली टाइम टाइम करवा देगा, उसके लिए आप मेरे साथ धंधा करिए। दैट वाज द वैल्यू एडिशन इन द प्रोग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। एंड 20 years now, you see, I mean, if you go and tell anybody that I'm going to submit your, I mean, forget submission, I think physical itself has, and that was, and in that era of 2003, 4, 5, when the boom has just started, that the rally has just started. So everybody was getting into mutual funds. I mean, IPO, I still remember, Nishant, it was, so the last trigger point was the R Power IPO, wherein we just peaked out in the market and there was a crash. Right from the sweepers who used to come in the branch, they have forced us to open their demat accounts and apply. So it was a very different environment, value prop, and it forced me to genuinely, from that day one, what is it that these financial intermediaries want from a technology perspective? It can't be just a person picking up the applications, going and submitting and timestamp. After ICICI Bank, I also got an opportunity to work with an ND, and even there I realized, you use a national distributor or even a banking ecosystem kind of a structure, you are somewhere, losing your independence, Nishant. And there is a huge cost which is associated with it, Nishant. Employment with 3 companies over almost 15 years. I think 2018 is where I realized that there is a unified wealth management platform. So that's, and I've been trying to crack it. We are live now. We have users who are using, quite satisfied to see the progress. So yeah, that was a trigger. I mean, different days, times have changed, requirements of IFAs, investors, regulators, markets have changed, and there is a change required. There has to be somebody who will build those solutions. Great. So all the best in your journey. तो लेकिन एक चीज हम लोग ने नोटिस की है आकाश, जैसे काफी एमएफडीज हैं, जैसे एनडी प्लेटफॉर्म्स काफी पुराने हैं, तो आज भी काफी एमएफडीज हैं जो एनडीज के साथ काम करते हैं. दे आर नॉट विलिंग टू चेंज. आप समझ रहे हो, वो उनका फिक्स है कि ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार है, मेरे को ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है, तो दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, राइट? तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे एमएफडीज को देखना चाहिए कि उनको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, लाइक मरकरी? क्यों आपको लगता है ऐसा? Yes, I think, Nishant, I think, so I think my personal views is that, with all due respect, see, India एक ऐसा देश है ना जहां पर it is never a winner takes all market, first of all. Especially हमारी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, तो whether it is mutual fund distributor or investment advisor or stock brokers, I mean, you will get examples from 2 extremes. So you will have cases where 1000 crore का AUM एक सिंगल आदमी मैनेज कर रहा है. मतलब it's next to impossible to believe, right, कि 1000 crore का AUM, even if you consider 1 crore average per investor, 1000 investors को मैनेज करना 365 days में without even taking a holiday, it's like 3 meetings a day, versus 1000 crore through a 100-member team.
versus a 10 crore with a single man army versus a 10 crore again with 10 members with sales team with operations team. So बहुत जरूरी हो जाता है निशान इसको इस तरीके से देखना कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, मतलब व्हाट इज योर विजन, आपको क्या बनाना है पहले तो, और आप कहाँ तक जाना चाहते हैं और आपकी एस्पिरेशंस क्या है. आई थिंक हमारे देश में जो टॉप 2 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म्स हैं, वन इज अ लिस्टेड एंटिटी नाउ and second is the highest paid commissions distributor, and I have known their senior management, I have taken guidance from them, they have been well wishers. What an incredible journey they have set for the industry, right? And again on the other side you have companies like us who are trying to build independent technologies. We have enough examples on both the sides of the table. अब जरूरी ये हो जाता है निशान कि इसको इस तरीके से देखना कि what I want to do in life. तो let's take an example कि जिसने अभी धंधा शुरू किया, let's say just ARN लिया है. I think for them, so let's go to 2000 era, 2000 थे for transactions. पेनिट्रेशन बहुत कम था, अवेयरनेस कम थी, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन्स नहीं थे, इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन इन सॉफ्टवेयर्स यू नो वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड ओवर टाइम. तब लोगों को लगता था यार मुझे 20% कमीशन रेवेन्यू शेयरिंग में मेरा चला भी जाएगा, 20, 30, 10 व्हाटएवर दैट नंबर इज, बट मुझे क्या एक रेडी प्लेटफॉर्म मिल जाता है. इट्स अ ह्यूज वैल्यू एडिशन निशान. प्लग एंड प्ले है, डे 1 पे स्टार्ट हो जाता है, ट्रेनिंग्स मिल जाती है मुझे कि धंधा कैसे करना है, इन्वेस्टर अवेयरनेस, मार्केटिंग कोलैटरल्स मिल जाते हैं. तो अदरवाइज इफ आई एम एन इंडिविजुअल ट्राइंग टू सेट अप माय ऑफिस टुडे, मुझे ऑपरेशंस सपोर्ट बनाना है, मार्केटिंग बनाना है, रिसर्च बनाना है, टेक्नोलॉजी बनानी है, लॉट ऑफ थिंग्स. तो जिसको ये सब एफर्ट्स नहीं लेने हैं, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, जिनको ये एफर्ट्स नहीं लेने हैं, आई थिंक उनके लिए द बेस्ट थिंग इज जस्ट प्लग एंड प्ले, बिल्ड अ प्लग एंड प्ले एंड यूज देयर रेडी प्लेटफॉर्म एंड शेयर सम रेवेन्यूज. ऑन द अदर हैंड कुछ यूजर्स ऐसे भी होंगे, तो यहाँ पर एडवांटेज है कि मेरे को डे 1 पे सब मिल जाता है, बट डिसएडवांटेज है कि जब आपका स्केल थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, the risk kind of a situation, how you enter it, Nishan. So I mean, like my previous company, they got shut down, right? And a lot of people have advantage to stand on their feet. तो एडवांटेज भी मिलते हैं, डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं हर चीज में. तो अगर आपको लगता है कि सो वन इज यू आर गेटिंग टाइड अप, exit becomes difficult. Second, if you, let's say if you want to expand your practice, get into new partners, shareholders, you want to list your entity, you want to dilute some equity, raise some capital, get into multi-asset, build the culture, build the processes the way you want. तो आपको फिर इस साइड में तो कस्टमाइजेशन के लिए आपको इधर, सो इट ऑल स्टार्ट्स विद, इफ यू वांट टू जस्ट डू अ सिंगल एसेट, म्यूचुअल फंड ही करना है, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक आई एम हैप्पी. 50 लाख से 100 करोड़ पे 75 पैसा अगर एवरेज पकड़ूंगा, 75 लाख मिलता है मुझे, 5-6 लाख रुपए है, मैं 2-3 लाख रुपए आराम से बना लेता हूँ खर्चे काट के, एंड आई एम हैप्पी. मुझे ये धंधा बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है, जब तक मैं हूं तब तक मैं करता रहूंगा, अनलेस आई फाइंड अ सक्सेसर. Somebody else who will want to build a corporate, have worked in corporate, now becoming independent, want to play that shareholding, raising capital, multi partners, multi asset, customization, new age processes. तो वो ये सॉफ्टवेयर में. I think rather than looking at the question in a way कि which model is right, I think I keep saying that इंडिया में आप कुछ भी बना लो, सब चलता है, आपको सब तरह के कस्टमर्स मिल जाते हैं. It's all about
what you want and how you look at things. Great, great, great. So talking about mastering efficiency and scaling in wealth management. So what are the three essential things according to you, Akash, that is required to do this? Yeah, I think this efficiency and scale has been, very close to my heart, and I've been putting in all our energies, capital, time, efforts, our life, our heart in solving and building these tools, Nishant. I think I've reached this belief system and a very strong conclusion that this whole efficiency scale has changed their meanings over time. तो आप 20 साल पहले अगर चले जाएंगे, as I told you in my starting note that efficiency place on time. That was efficiency. Scale was how can I collect this piece of paper from as many people as possible. And I had one more. ICICI Bank had an FPO, follow-on public offer. In both the times I was with ICICI Bank. So our power ka IPO and ICICI Bank ka FPO. We used to have meetings to plant people कि यार आप कल्याण स्टेशन चले जाना, आपको इतने बजे की ट्रेन पकड़ के आपको डोंबिवली आना है, आपको इतने बजे थाने जाना है, आपको इतने बजे वाशी जाना है. एंड वी यूज्ड टू सेंड ईमेल्स फॉर अप्रूवल्स कि यार मुझे सर 5 लोग और लगेंगे फॉर 3 days और मुझे शिफ्ट में काम करवाना पड़ेगा क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस इतने बजे कलेक्ट होती है. इट्स सो वी वर मास्टरिंग efficiency and scales in that era of paper was completely different versus the efficiency and scale of today. So if I come to 2023 and maybe have a slighter medium-term vision till 2025-27, I think efficiency and scale में निशान because अपने धंधे के अंदर जो यूजर्स है, लेट्स से वो स्टॉक ब्रोकर है, ARN होल्डर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इंश्योरेंस एजेंट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जो भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, he has to get into multi products first. And I think we have seen enough examples. Just try to imagine if banks as a company used to have only CASA as a product, if HUL had only one SKU, if ITC had only one brand of tobacco that they're selling, stuff like that, they would have been extinct. They would not have been in existence today. So bringing efficiency and scale, the meanings has changed today, where and that is also to do with what we are trying to genuinely crack, not as a business for profit organization, but as we go along, maybe I'll try and share more examples. But I think bringing efficiency and scale, one is have more SKUs. The moment you have multi products, offerings or service, you need to have process automations. You can't be running the same processes the way you were running a single asset. So process automation is definitely very important in efficiency and scale. And I think in the last 5 years, Nishant, पिछले 5 सालों में ना हमारी इंडस्ट्री ने we have come a long way, right from digital KYC, video KYC, thanks to BSE, NSE, MFU, specifically for mutual funds, where transactions have got onboarded. So whenever I interact with IFAs, I tell them कि अपने business को 5 buckets में divide कर लो and then digitize every bucket for efficiency and scale also. So the first bucket is onboarding a customer. अब उसमें आपका KYC भी आ जाएगा. अगर आप कोई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो तो उसके IN, CAN, UCC क्रिएट करना आ जाएगा. अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो उनके अकाउंट ओपनिंग्स आ जाएंगे, PMS, AIF, स्टॉक ब्रोकिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो ऑनबोर्डिंग बिकम्स वन बकेट.
the immediate thing after you do onboarding is transactions. So transaction becomes one bucket thanks to exchange platforms for you, MF. And as we progress, we will also try and think over, discuss about the other products as well. So transaction. Third, after the transaction, it's reporting. Fourth is analytics, analyzing all the reports. And the last is revenue reconciliations. It could be commissions from different products, receivables, payables, RECO, advisory fees, brokerage fees, various stuffs. So onboarding, transactions, reporting, एनालिटिक्स एंड रेवेन्यू रिकंसिलिएशन, ये पांचों फंक्शन के अंदर आपको डिजिटल जर्नीज बनानी पड़ेंगी अपने कस्टमर्स के वर्कफ्लोज के लिए. तो वन, गेट इनटू मल्टी प्रोडक्ट्स. सेकंड, फॉर ऑल दीज मल्टी प्रोडक्ट्स हैव अ प्रोसेस ऑटोमेशन and digitize all these 5 buckets for all the products. Once you are able to achieve these 3 points, then to a very large extent you will be able to bring efficiency, and efficiency leads to scale. So good 5 points that you have given. So Akash, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं कंपेयर टू फिजिकल, बट आज मुझे कुछ नंबर्स जानना है, आपका एनालिसिस जानना है कि कितने पैसे बच सकते हैं आखिर. I think, Nishant, we are also, we have discussed many times in our meeting rooms कि हम ये जब बोलते हैं कि exchange platforms आ गए, तो क्या difference आया है इस? And I will try and relate it not just to transactions but also to all the 5 buckets: onboarding, execution, reporting, analytics and revenue. तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगेन I go back to my initial days. We used to have budgets approved to manage papers. Forget us as manufacturers or distributors, but एक IFA की जिंदगी को देखते हैं कि यार उसको पहले just try and imagine अगर उसको 100 SIP करने हैं. आज तो अभी पिछले 5-6 सालों में कितने सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट देखे गए हैं कि 100 SIP से शुरू हुआ था एंड 500 SIP, 1000 SIP एक दिन में, 5000 SIP का आई रिमेम्बर लास्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ. इट वाज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल इन द फिजिकल डेज, क्योंकि जब तक मैं सब चीजें को कलेक्ट करके जमा कराना चाहता हूँ, कॉन्टेस्ट होते थे तभी पर एप्लीकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो एक मैकेंजी की एक स्टडी है निशांत, जिसमें कहा गया है कि नॉट जस्ट फिनटेक, सो एक जनरल कहा गया कि डिजिटाइजेशन कितना कॉस्ट रिड्यूस करता है. तो वो नंबर आया था फ्रॉम अ मैनकाइंड पर्सपेक्टिव अराउंड 30%, कि डिजिटल में आप इमीडिएटली डे 1 पे 30% आपकी कॉस्ट रिड्यूस होते हैं. बट वो कॉस्ट रिड्यूस से ज्यादा आपको ये देखना है कि आप वो 30% कॉस्ट तो बचा ली, बट वही एक आदमी जो प्रोडक्टिविटी 100 रुपए की कर रहा था वो आज 300 रुपए की कर पा रहा है. तो कॉस्ट तो बच ही रहा है, बट डिजिटाइजेशन को आपको कॉस्ट बचाने से ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज करने के ऊपर ज्यादा फोकस अगर आप करेंगे ना, देन दैट नंबर इज लुकिंग वेरी डिफरेंट. तो 100% कॉस्ट बचती है. अब किसी के लिए, एज आई टोल्ड यू, कि एक आदमी 1000 करोड़ का धंधा करता है अकेला, एक आदमी 1000 करोड़ का धंधा 100 लोग के साथ, और उसमें सिर्फ एमएफ के साथ साथ अगर मैं मल्टी प्रोडक्ट को लिंक कर दूं कि चलो कोई आदमी 10 प्रोडक्ट्स भी करता है, राइट फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्टिल, सो इन्वेस्टमेंट्स, लायबिलिटीज एंड रिस्क एंड एस्टेट, एवरीथिंग. सो 25 to 30% तो कॉस्ट रिड्यूस होती है, बट द एफिशिएंसी नंबर इज 100%. तो वही आदमी आज आप 100, 500, 1000 SIPs जो कर पा रहे हो, इससे इवेंचुअली आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है. तो कॉस्ट सेविंग तो हो ही रही है, बट आपका रेवेन्यू 2-3 टाइम्स बढ़ सकता है डिजिटल. ऑल्सो की टाइम जो बचता है उसमें और कुछ प्रोडक्टिव काम हम कर सकते हैं. टाइम इज मनी, प्रोडक्टिविटी वही है, सेम टाइम ही है सबके पास. दिन के 8 घंटे, ज्यादा मोटिवेटेड है तो 10 से 12 घंटे, फाउंडर्स एंड ओनर्स है तो 15-16 घंटे काम कर लेता है. I mean, not like physical, but your mental mind, your state is already working. So वो limited time में अगर मुझे tools मिल जाते हैं निशान, तो मैं cost के साथ साथ मैं productivity, revenues बढ़ा सकता हूँ. I think that is a fun, and that also निशान
forces me to think that it's a mindset change also, isn't it? Yes, yes. कि लोग है ना ये cost. So I started with sales and I've seen multiple functions. Cost and revenue side. So I keep saying, even in today in my company, that is there a way where I can make every function a revenue center instead of a cost center? क्योंकि जब आप कॉस्ट की तरह उसको देखने लगते हो ना, तो आप उसको देखते हो कि यार मैं इसको रिड्यूस कैसे करूं, मैं कंट्रोल कैसे रखूं. बट आप जब उसको रेवेन्यू की तरह देखने लग जाओगे कि यार मैं इसको रेवेन्यू सेंटर कैसे बना सकता हूँ. सिंपल एग्जांपल कि कस्टमर सर्विस बहुत सारे लोगों के लिए कॉस्ट होती है. राइट. हमारी कंपनी में कस्टमर सर्विस इज अ रेवेन्यू सेंटर बिकॉज इवेंचुअली फॉर आईएफएस ऑल्सो उसका जो बैक एंड ऑफिस ऑपरेशन वाला है या ऑफिस बॉय है, दे कैन जनरेट लीड्स फॉर द कंपनी, दे एंगेज द कस्टमर. सो आई थिंक उसको रेवेन्यू की तरह देखेंगे डिजिटल को ना, तो माइंडसेट and the way to look at things completely changes. So Akash, so many advisors, I mean, want to shift their entire business to digital platforms. I mean, they want to make their business completely digital friendly. So what is the step-by-step process to do that? Yeah, I think, see, I've been asked this question many times, Nishant, and I've been telling this very clearly. I was talking to a few friends at exchange platforms for MF, and in this, so when you look at our industry beyond mutual funds, let's take stock broking industry, let's take PMS AIF. अभी पिछले कुछ सालों से बहुत यूनिक एंड बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक P2P पॉपुलर हो रहा है. लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स अभी बहुत ट्रेंड, स्टॉप रिडम्पशन एंड बहुत चल रहा है. इंश्योरेंस वेरी ह्यूज, अंडर पेनिट्रेटेड. इंटरनेशनल इक्विटी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं. सो व्हेन आई एंड जेन्युइनली अ लॉट ऑफ दीज assets or the product manufacturers have genuinely put lot of hard work capital in digitizing these journeys. तो निशांत, मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है उसे अपना बिजनेस को अगर डिजिटल पूरा लेके जाना है, तो स्टेप वन आई थिंक इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू लुक एट हु आर द स्टेक होल्डर्स. तो एक आरटीएस डेफिनेटली हो गए, दूसरे हो गए एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स बोल देते हैं. हर एक प्रोडक्ट के लिए अपने अपने एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं आज. एवरी प्रोडक्ट टुडे इंक्लूडिंग आई थिंक इवन पीएमएस एंड एआईएफ में, whether it is custodians, whether it is back office softwares or new age fintech companies, even PMS AIF, insurance, बहुत सारी चीजों में डिजिटल जर्नीज बन गया. तो my only request, suggestion to the audience here is to make your business digital. First thing is go and sign up with all these platforms. And some of these platforms have integrated KYC, CKYC, like client account opening, transactions. तो निशान, दो चीज में डिवाइड करता हूं मैं इस चीज को, कि एक होता है फ्रंट ऑफिस, एक होता है बैक ऑफिस. जनरली फ्रंट ऑफिस आपके ऑनबोर्डिंग, केवाईसी एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड चीजों को करता है. आप कोई भी इंडस्ट्री के कोई भी प्रोडक्ट्स के फ्रंट ऑफिस उठा के देख लीजिए. एंड बैक ऑफिस होते हैं जो उस ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करके रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, लेजर्स, कैपिटल गेन्स, रेवेन्यू रिकंसिलेशंस. सो हाफ बिजनेस इज डन बाय फ्रंट ऑफिस अप टिल ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शन के बाद का बिजनेस सारा डिजिटाइजेशन बैक ऑफिस करता है. So one, I think you should go and tie up with all these exchange platforms, manufacturers, RTAs. And second, you should try and definitely have a software in your office who does these integrations for all this. I'm not saying for Mercury, but I think our industry collectively, there are few players who have done extremely good job of creating a very good tech platforms. So tie up with exchange platforms, tie up with software. ये दो चीज करने से आपका काफी हद तक बिजनेस डिजिटल हो सकता है.
या आई थिंक ये दो चीजों में, और उसमें भी लुक एट इट फ्रॉम दोस 5 buckets. सो ऑनबोर्डिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स एंड रेवेन्यू, ये पांचों चीजों को मल्टी प्रोडक्ट्स के अंदर हर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर के साथ मैं डिजिटल जर्नीज में इंटीग्रेट कर सकूं, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल सके मुझे जो ये सब चीजें मेरे लिए करके दे. आई थिंक ऑटोमेटिकली योर बिजनेस बिकम्स डिजिटल. So Akash, today many MFDs and advisors have their own website. They have social media presence and they use sort of business software as well. So what should be the next step? What should be the next step to transform their business completely digitally? या सो निशांत, मुझे लगता है कि so I'll give you an example. I'll try to answer this through an analogy. So let's take, so मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में I tried to answer, explain you what is a front office and what is a back office. Yes. तो अभी आप विजुअलाइज करते हैं. Let's take mutual fund because that is close to our heart. You know, as a product solves a lot of problems. तो म्यूचुअल फंड के अंदर बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस बने. तो फ्रंट ऑफिस ऑनबोर्डिंग एंड केवाईसी करेगा और ट्रांजैक्शंस करेगा, तो बीएससी, एनएससी, एमएफयू बन गए. और बैक ऑफिस के अंदर सॉफ्टवेयर्स बन गए जो उस ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं, लाइक वी आर देयर एंड देयर आर फ्यू अदर्स हु आर डूइंग अ गुड जॉब. अब दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग. एंड आई थिंक आई कीप, व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई कीप सेइंग कि जब 21 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ था और डे 1 था, तब मार्केट का बॉटम था. दैट वाज द डे ऑफ मार्केट बॉटमिंग आउट. एंड सिर्फ शेयर बाजार ही एक ऐसी चीज थी जो चल रहा था, बाकी एवरीथिंग वाज हॉल्ट. तो जितने नए इन्वेस्टर्स एंड मेनी वेटरन्स ऑफ आवर इंडस्ट्री सेड, द न्यू इन्वेस्टर्स हु हैव कम इनटू our capital markets, experiencing capital investments either through mutual funds or direct equity, experiencing for the first time, उन्होंने तेजी देखी है अभी तक. वो मंदी वाला दौर नहीं देखा है अभी तक. और इसीलिए बहुत सारे लोग आज ब्रोकिंग में भी आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं. वी हैव सीन दोस नंबर्स. 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं, यूनिक 4 करोड़ लोग हो गए हैं. वी डबल द नंबर्स ऑलमोस्ट. तो ब्रोकिंग के फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस भी है. तो फ्रंट ऑफिस में आपका ओडिन कनेक्टर विच इज 63 मून्स, रूपी सीड, ये सब कंपनीज आ गई. बैक ऑफिस में क्लास, टेक एक्सेल, लीदा दीदा, लॉट ऑफ दिस कंपनीज विल कम. फिर जो बड़े ब्रोकर्स है उनके खुद के सिस्टम्स. तीसरा हम लेते हैं एग्जांपल पीएमएस एआईएफ का. तो उनके फ्रंट ऑफिस हो गए कस्टोडियंस, बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गए माइल्स, वेल स्पेक्ट्रम. फिर हम P2P देखते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स लाइक पेयरसेन, लेनदेन, लिक्विड लोन्स. लैम्प, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड देखते हैं तो गोल्ड, अभी लोन्स. इंटरनेशनल इक्विटीज में स्टॉकवेल, वेस्टेड, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स. फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस में either टर्टल मीन, पॉलिसी बाजार, और डायरेक्टली यू आर टाइड अप विद द इंश्योरेंस कंपनीज. estate planning, unlisted securities. Then your investor will also have loans, credit cards, home loans, personal loans, car loans. अब 10-12 प्रोडक्ट्स के अंदर 25 से 30 कंपनीज हैं जो फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस देती है. एंड दे डोंट टॉक टू ईच अदर. निशांत, ट्राई एंड विजुअलाइज दिस. दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. और आपको पता है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि पिछले 20 सालों में उस प्रोडक्ट का फ्रंट ऑफिस हैज बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का फ्रंट ऑफिस. अगर मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूं ना, तो मैं म्यूचुअल फंड का बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट बन गया. तो अगर मैं आईएफए और मुझे जेन्युइनली आज मल्टी एसेट में जाना है, मुझे आज मेरा कंपटीशन लगता है ग्रो, फिस्डम, इंडवेल्थ के साथ है, जो आज न्यू एज प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, जिन्हें डिजिटल जर्नीज मिल रही हैं. तो मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए. मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो या तो मुझे सारे प्रोसेसेस दे या वो इंटीग्रेट करके दे. तो आज मुझे, अगर मेरा क्लाइंट है, उसका मोतीलाल में ब्रोकिंग अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, पीएमएस है, तो अगेन
थोड़ा डीप और जाके सोचिए तो क्या हुआ, हमने इंक्लूडिंग अस अंटिल 2 years बैक, पिछले 20 सालों से जो हमारी एग्जिस्टेंस है, हमने भी म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट, एंड टू एंड सारे सॉल्यूशंस हमने सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद लोगों ने आके बोला यार मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए, तो मैंने ऑफलाइन वर्जन बना दिया इंश्योरेंस का, एक्सेल अपलोड दे दिए, एंट्रीज दे दी, बट उससे एफिशिएंसी और स्केल तो नहीं आएगी निशांत। यस, तो मैं बोल रहा हूं कि उस पांचों बकेट के अंदर डिजिटल जर्नीज का एफर्ट इज द रियल फ्यूचर फॉर एफिशिएंसी एंड स्केल। आज आप ब्रोकिंग का सिस्टम उठा लो और उसको बोलो कि यार मेरे को म्यूचुअल फंड जितना एक्सपर्ट रिपोर्टिंग दे दे, वो नहीं दे पाए, बट स्टॉक्स की रिपोर्टिंग म्यूचुअल फंड के सॉफ्टवेयर से ज्यादा अच्छी होगी। पीएमएस के अंदर पीएमएस की रिपोर्टिंग अलग होगी, इंश्योरेंस में सिर्फ इंश्योरेंस होगा, पी2पी में सिर्फ पी2पी होगा। बट मैं एज एन आईएफए, या तो फिर मैं वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चले जाऊं और उनका सब ब्रोकर बन जाऊं, या फिर मुझे 3-4 सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे अपने ऑफिस के, जिससे एफिशिएंसी और स्केल किल हो जाती है। सो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सबके पास सब कुछ है आज, आप जेन्युइनली देखोगे ना तो उनके पास नहीं है वो सब चीजें। मतलब एक म्यूचुअल फंड का सॉफ्टवेयर लेने से और उसके अंदर ऑफलाइन वर्जन्स बनाने से मैंने डिजिटल जर्नीज नहीं बना ली है, मैंने एक जुगाड़ वर्जन क्रिएट कर लिया सिंपल अपने लिए, कि जिससे मेरा काम तो चलता रहेगा। यस यस, राइट। तो आई थिंक टाइम हैज कम कि अगर ये पिछले अगले 5-10 साल भारत देश में, यू नो, वी आर इन अ गोल्डन डेकेड एंड वी हैव टू अनलीश दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत इन्वेस्टर्स आएंगे, प्रोडक्ट्स एक्सपांड होंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए आज हमारे देश में जो डिजिटल जर्नीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स, अक्रॉस दिस 5 बकेट्स को टिक कर सके। तो आप बोल पाओगे कि हाँ मैं अपना बिजनेस को डिजिटल, और उसमें सीआरएम को ले जाओ, रिसर्च को ले जाओ, मार्केटिंग को ले जाओ, तो और 3 सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। एक कनेक्टेड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आई थिंक इज द फ्यूचर। Guys, you can post your questions in the chat box. Okay. So, Akash, I wanted to understand कि टेक्नोलॉजी से हम लोग क्लाइंट एंगेजमेंट और क्लाइंट रिटेंशन कैसे कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, ये 2 एस्पेक्ट। Yeah, so I think Nishant, I think client acquisition. So let's start with client acquisition. I think if I was an IFA, for example, because see, if you want to build something, you need to know your customers. So हमारा business हमेशा से रहा है और रहेगा. We are a B2B company. We are not a B2C company. We don't have any B2C licenses at all. तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है एज फाउंडर्स who are building solutions कि हम हमारे कस्टमर्स को जाने और उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए. तो in that vision, in that mission that we have seen, Nishant, मुझे लगता है कि client acquisition में and I think enough seminars, webinars, veterans of our industry have explained this कि यार मैं आज म्यूचुअल फंड देने जाता हूँ, उसमें एक्विजिशन करता हूँ. सो इमेजिन इफ आई एम गोइंग टू अ कस्टमर, वो बोलता है फॉर एग्जांपल मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है, तो मैं उसको क्या और दूसरा प्रोडक्ट के लिए भी एक्विजिशन कर सकता हूँ. सर आप बैंक में रखा है, लिक्विड फंड बहुत किया हुआ है, मे बी ही नीड समथिंग न्यू, तो क्या मैं उसको कुछ और प्रोडक्ट दे सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट. तो ये टेक्नोलॉजी को एक्विजिशन के अंदर, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमने क्या किया निशांत, हमने सो लॉट ऑफ पीपल केम आउट टू अस एंड सेड मैं बीएससी में स्टार में करता हूँ बट प्रॉब्लम्स आती है कभी, फॉर एग्जांपल, या एनएससी में प्रॉब्लम्स आती है, एमएफयू में कभी प्रॉब्लम्स आती है. आई एम नॉट नेमिंग अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आई एम जस्ट सेइंग मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे था. तो वी यूज्ड टू टेल पीपल कि यार तुम तीनों प्लेटफॉर्म्स पे रहो. तो वी बिल्ट अ टूल वेयर आप जब एक क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग करते हैं ना, तो सिंगल ऑनबोर्डिंग में आपका तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आईआईएन, कैन और यूसीसी बन जाते हैं एक साथ इन वन वर्कफ्लो. एंड दिस इज जस्ट म्यूचुअल फंड्स. आप उसी वर्कफ्लो के अंदर अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऑनबोर्डिंग करनी है, लेट्स से यू वांट टू ऑनबोर्ड अ कस्टमर इन ब्रोकिंग, पीएमएस, एआईएफ, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, you can do those things. So acquisition using technology has to be linked, and again I'm trying to sum up by
अराइविंग एट दोज डेडिकेटेड एक्शनेबल पॉइंट्स कि आप उसको ऑनबोर्डिंग एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करो कि एक्विजिशन के लिए सबसे पहले अगर वो रेडी भी हो जाता है तो वो बोलेगा ऑनबोर्डिंग फॉर्म करो, केवाईसी अगर उस प्रोडक्ट की है और ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज है क्या. Second, on the retention, I think it is extremely important that we have to start realizing कि दौर और समय मल्टी एसेट का आ गया है. कस्टमर चाहता है कि यार आप मेरे को एक ओवरऑल पिक्चर दिखा दो, भाई मेरे पास पैसा कितना है. सी आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग करो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है या गलत है. मैं बोल रहा हूँ कि आज कस्टमर के पास जाके अगर आप किसी तरीके से उसको दिखा सकते हो कि यार आपके पास म्यूचुअल फंड्स तो है ही, आपके पास चलो ये पीपीएफ में पैसा पड़ा हुआ था, एनपीएस में, केवाईसी में पड़ा हुआ है, आपके पास ये इंश्योरेंस पॉलिसीज पड़ी हुई है, इज इट सफिशिएंट देयर, नॉट देयर. प्लानिंग भी नहीं करे तो एटलीस्ट रिपोर्टिंग करने से एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाएगा निशा, और उससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपका कॉम्पिटिटर अगर वो चीजें कर रहा है सारी चीजें और आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो लीकेज आने की संभावना है. यू कैन हैव अ रिस्क ऑफ लूजिंग द कस्टमर. एंगेजमेंट हम क्यों करते हैं कि यार वो रिटेन हो जाए, मेरे साथ जुड़ा रहे, वो कहीं और ना जाए. राइट. हम इसी के लिए एंगेजमेंट करते हैं, और कोई मतलब मैं एंगेज इसलिए करता हूँ कि यार ही कंटिन्यूज टू बी माय कस्टमर. Yes, absolutely. फिर उस एंगेजमेंट के अंदर मैं उसको उसके परफॉर्मेंस के रिव्यूज बताऊंगा, गोल के रिव्यूज बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसको, और क्या क्या चीजों की जरूरत है. कि सिंपल रिडम्पशन, पैसा उसको जरूरत पड़ी सडनली, तो रिडम्पशन की जगह क्या मैं उसको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड दे सकता हूँ क्या. तो बट उसके लिए मेरे पास वो प्रोसेस होना चाहिए. अब इमेजिन करो मेरा करंट सॉफ्टवेयर अगर मुझे वो चीज नहीं दे रहा है, या मुझे कोई कस्टमर आके बोलता है P2P करना है, वो बोलता है मेरे को पीएमएस या मेरे को फिक्स्ड इनकम का बॉन्ड खरीदना है, या मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना है, या एचडीएफसी ट्विंस अभी मर्जर हो रहे हैं और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अभी डी लिस्टिंग का आ गया, वो बैंक में मर्ज हो रहा है, कैन यू बाय मी 100 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो. तो आई डोंट हैव टू देन गो पिलर टू पोस्ट कि यार अब इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लूं मैं, या मैं उस कंपनी से डायरेक्टली टाइप करूं क्या. अगर इमेजिन करो अगर उसी के अंदर मैं क्लिक करके बोल दूं कि यार चल ठीक है सर आपको ये करना है, चलो डन, ठक 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 ठक, डेटा ऑलरेडी है, ओटीपी दिया, ऑथेंटिकेट किया, सर देखो आपका ये ट्रांजैक्शन होगा, रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ गया. तो एंगेजमेंट और एक्विजिशन को देखने के नजरिए से यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट अ सिंगल प्रोडक्ट. एंड अगेन जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, ये 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करो, सारे प्रोडक्ट्स को मैप करो एक शीट के ऊपर और टिक बॉक्स बनाओ. एज एन एक्सरसाइज ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडेंट्स टू डू दैट कि हर प्रोडक्ट का नाम लिख लो जो आपके कस्टमर ले सकता है या लिया हुआ है. अगर उसके नहीं भी है ना तो भी आप वो लिख दो प्रोडक्ट पेपर पे, और उसके लिख दो कि उसका फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस क्या क्या और ये सारी कैपेबिलिटीज मेरे पास है कि नहीं. तो आपका एंगेजमेंट और एक्विजिशन बहुत लेवल तक सॉर्ट हो जाएगा. So Akash, so as we know that there are many platforms in the industry, why do you think that advisors MFDs should use Mercury by Vijya Fintech? I mean, you are asking me to directly do a sales call on this. I think Nishant, मुझे so पहली बात तो I think I want to use this opportunity to share. मैं जब हमारे peers, competitors के founder से मिलता हूँ, I genuinely want to bring this point कि आज हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. कोई भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है वैसे वैसे कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है. आज सॉफ्टवेयर आते हैं, यू नो दोज नंबर्स राइट, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए साल का. So while there are enough platforms, you have to look at it feature rich या कॉस्ट देखना है. आज वेल्थ मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखोगे तो 50 लाख से 10 करोड़ के रेंज में भी प्लेटफॉर्म्स हैं आज. देयर आर कंपनीज हु सेल मल्टी एसेट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स स्टार्टिंग विद 50 lakhs goes up to 10 crores.
There are platforms who does single product digital journeys and the other products ka jugaad versions for 5,000-10,000 rupees. But those softwares with digital journeys of single product and jugaad versions of other products, one, it's not scalable and efficient because you end up doing a lot of manual stuff. And second, you have to think about sustainability also. जैसे मैंने बताया कि आज एक एनडी अगर बंद हो जाता है ना तो आई हैव टू शिफ्ट माय बिजनेस टू सम अदर प्लेटफॉर्म. Extremely difficult. It is like a divorce, Nishant. Risk of data. Which are the verticals? So there are companies who also run B2C verticals and do B2B also. There are companies who were doing B2C have now come into B2B. There are companies who keep reducing the price and say कि चलो आपको 10,000 में दे रहे हैं, मैं सर आपको 8,000 में दे देता हूँ, 12 महीने की जगह पे 15 महीने में ले लीजिए आप. बट आपको ये रियलाइज करना है सर कि 10,000 रुपए एवरेज 1,000 कस्टमर में 1 करोड़ रुपए में जीएसटी हटा दो. तो जो हम एग्जांपल एमएफडीज को बताते हैं ना कि आपका 75 पैसे का धंधा जीएसटी काट के आपका ऑपरेशनल मार्केटिंग कॉस्ट ऑफिस के रेंट काट के क्या बच रहा है, तो आप कुछ ना कुछ तो मल्टी प्रोडक्ट्स एडिशनल इनकम जाने के लिए यू विल एंड अप डूइंग समथिंग. Right. So we don't compromise on ethics and principles. We are here. It's a 25-year-old brand. 25 साल की legacy है, brand है. Vijaya has been around strong, and now we have support of very strong board, shareholders, truly a multi-asset products, feature rich. हमने निशांत म्यूचुअल फंड्स के अंदर itself 5 ऐसे इनोवेटिव मॉड्यूल्स निकाले जो प्राउड टू से एज अ फाउंडर कि फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स आए अपनी इंडस्ट्री के अंदर, म्यूचुअल फंड रिलेटेड मॉड्यूल्स, यूटिलिटीज. And if I continue to talk about them, I think we can continue for next 24 hours. So to keep it short, I think don't, and not just Mercury, I think I wanted to use this opportunity to share about overall industry well-being of IFAs. तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए सर, उसमें कोई प्रॉब्लम, बट आप लॉन्जिविटी, उनका बैकग्राउंड, B2C B2B, क्या एक्सपीरियंस है, टीम क्या है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी इट्स टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है. डेटा लीकेज एंड ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू कीप, एंड फीचर के ऊपर फोकस करके फीचर रिच कितना हो सकता है. सो आई थिंक वी डू अ टिक अक्रॉस multiple checkpoints, Nisha. We are building an affordable platform, a tech rich platform. और आज हम उसके टेक पार्टनर बन रहे हैं. आज हम आईएफए के, हम उनको ये बोलते हैं कि आप टेक्नोलॉजी मत बनाओ इन हाउस, हम आपके सीटीओ हैं. वी आर योर सीटीओ, वी आर योर टेक पार्टनर्स. So Akash, one last question. So what are the 3 things that MFDs and RIAs should know before partnering with Mercury? 3 things before you know. I think I tried to answer that in the last question, but I mean, still for the benefit, I think you have to look at us that we are truly, trying to solve this unified wealth management, digital journeys across products, across front office and back office. We have a very strong legacy. 20 साल and more than 2,500 users, and some of our users have been with us for 20 years, Nisha. They have grown with us. We have grown with them. So longevity, seriousness, brand, ethics. We've never done B2C, never intend. We don't understand. We'll get into that. We just have now transformed from a single asset back office software to a truly digital back office software. I today we are so, it's a very important day that we got a chance to address your audience. Plus we are today live on connector with 63 Moon. They are the largest front office company in stock broking. It just unleashes completely new opportunities for stockbrokers, distributors or advisors. And third, this whole unified wealth management platform where you
get this experience of all the products digital journeys. Some features, if you want me to name, like CRM is there, model portfolio dashboards are there. The client statements are like next level family office wealth management reporting. It's not the standard traditional tabular format, scheme name, invested current and XIRR. I mean, I know that we are used to those reports. We also have those reports, but showing multi-asset, multi-advisor, multi-family reporting. Okay. सो आकाश, एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी चीज से कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेरी होती है, तो आप लोग कैसे उसको सपोर्ट करते हैं इस केस में? Yeah, so I think we've just done and launched our ticketing system while there was already a legacy. So there is a customer support function. There have been heads of functions of customer support who have been hired. So we try to address those queries in the way that whether it is revolving around execution or reporting, there has to be some resolution within the given defined SLAs. So customer support function is responsible for that. Okay, so with that, we have come to an end to this interesting session. Thank you so much, Aakash, for your valuable time and inputs. Pleasure. It's been quite an honor, Nishant. Thank you for having me on this webinar of yours. I hope I was able to do justice to that 60 minutes that you have given me. And we continue to look forward to work together for the industry. We have been a strong supporter of Cafemutual in all their initiatives, and that support should continue for years to come, Nishant. Yes. Sure. So, yeah. And finally, I thank each one of you for being such a wonderful audience. Have a great weekend, guys. Bye. Thank you, Nishant. Thanks.